Mr. YSG recently served as chairman of the association and has also concluded 4 years of service as the president of the International Publishers Association. He has also served on dozens of charitable, educational, and industry boards, including Princeton University, South Federal State University, the Korean American Community Foundation, and MacArthur Theatre. He's a leader in the media and technology industry and currently serves Elsevier and Relics in the different capacities. In his primary role as Director of Corporate Affairs and Asia Strategy for Relics, he is responsible for government affairs, corporate communications, and corporate responsibility. As non-executive chairman of Elsevier, he works directly with governments, Elsevier customers, and industry associations worldwide. May I request for the video message of Mr. YSG? I'll once again request members of the audience who are standing to please kindly have your seats. Hello, everyone. I hope you're doing well. Before I begin, I want to thank Pranav for that kind introduction and for inviting me to speak today. Even though I could not attend in person, I would never miss the opportunity to congratulate FIP on its 50th anniversary. My friendship with Asoke goes back to when I first joined IPA as AP's representative of the executive committee. There was this experienced and book-passionate man who represented Indian publishing community so wisely. We enjoyed our partnership not only in IPA context, but in other professional and personal realms, and I am richer for this friendship. All of you Indian publishers should be proud of what you've accomplished over the past half century, especially given the enormous changes our industry has experienced. From the invention of the internet driving a transition to digital content, to Amazon and Lightning Source disrupting how we distribute books, to data analytics becoming more important than ever, it has not always been easy for publishers to keep up. When you're looking ahead, I predict that the next 50 years will not be any easier. But before I dive into the future of publishing, I want to take a moment to share a century-old story from before FIP even existed. Recently, my company Elsevier and the Ministry of Education co-hosted a G20 Science and Education Summit in Pune. During that event, one of my Elsevier colleagues told a story about a famous Indian physicist that completely blew me away. You surely all know of Sir C.V. Raman. He is likely to be the most famous Indian scientist of all time. He was the only Nobel Prize winner in the science categories from India. In any case, to put his achievements into words that those of us who are non-scientists can understand, Raman revolutionized the way we understand color. He was the first scientist to properly explain why the sea is blue. You see, he discovered that when the light hits the water molecules, blue light bounces off the molecules while other colors with longer wavelength were absorbed. Raman built off this discovery and had a long, successful career. And in 1930, he received the Nobel Prize in Physics, which is perhaps the highest honor a scientist can receive for a lifetime achievement. But despite his accomplishments, what really interested me about Raman was his background. When Raman was growing up, his father was a high school teacher who earned only 10 rupees per month. Money was tight, especially because Raman had 7 siblings. And even coming from this modest background, Raman had one life goal: to win a Nobel Prize. But the path to this goal was completely uncharted. No Asian had ever won a Nobel Prize in the sciences before. So with a little money and an unknown path ahead, how did Raman succeed? Well, I believe he possessed 3 qualities that helped him navigate the uncertainty. First, he was trusted. Raman never cut corners in his work, even where his colleagues might have found a shortcut. So ever since Raman's first research paper was published when he was only 18, he built a strong reputation of conducting high quality, accurate research. Second, he had a global mindset. When he was very young, Raman's instructors predicted
he would never be able to travel abroad because of his poor health. But he insisted on seeing the world, and this led to his greatest discoveries. It was on a boat home from England, crossing the Mediterranean Sea, when Raman was inspired to study the blue color of the ocean. And finally, he was constantly unapologetically innovative. Before Raman's discovery, the accepted theory for why the sea was blue was written by the same scientist who had discovered why the sky was blue. It seems crazy that any scientist would want to challenge this expert. But Raman pushed the boundaries anyway, and this innovative mindset set him on the path to receive a Nobel Prize. Now, I recognize that most of the people in the audience are not academic publishers like Elsevier is. And as the chairman of Elsevier, I admit I'm often drawn to stories about scientists. But despite my bias, I believe that the lessons of this story can be applied to the publishing industry more broadly. Today, our industry is facing enormous changes. Rapid advancements in artificial intelligence and machine learning are transforming the way people access, read, and write content. Everywhere I go, people ask me, how will AI affect my publishing business? Sometimes these questions are much more dramatic, like, will Gen AI kill publishing? There's so much uncertainty, but I'm certain of one thing. We must not fear these changes. This is because we have the power to ensure that these technologies help us rather than harm us. Remember those qualities that helped Raman on his journey to the Nobel Prize? Well, in my view, those are the same reasons why our publishing industry has such profound impact in our society. From individual authors to editors to the broader publishing industry, we are trusted, global, and innovative. As long as we hold true to these values, no challenge is too big to overcome. And to explain what I mean, let me first ask you this question. Everyone is scared of AI taking our jobs, but have any one of you actually tried to read an article written by AI? So the key word here is tried, because the content is often unusable. The reason is quite simple. If you put garbage into an AI system, then you get garbage out of the system. Machine-generated content that learns from everything on the internet will be affected by some of that content that is untrustworthy, meaning that the content is false or low quality and inconsistent. On the other hand, the publishing ecosystem is built on trust. Everything we publish has been repeatedly vetted, edited, and revised. Our customers trust that their educational textbooks are accurate, that self-help books are written by experts in that field, and that novels are written by real humans who understand emotions. Like C.V. Raman, our industry has built a positive reputation. While Raman built his reputation over decades, we've been proving our trustworthiness for centuries. As AI becomes more widespread, this trust we have earned will be worth more than gold. And just like we would protect gold from thieves, we also must protect our trusted content from those who want to steal them without properly compensating the rights owners. We can only do this well if governments adapt and enforce AI regulations that safeguard copyrighted materials. Everyone here is a steward of intellectual property, so you should all be advocating loudly for those regulations. India especially has an opportunity to be a global leader on responsible AI regulations. Not only does India have a huge stake in the game, with so many creative industries thriving in your country, but trust is central to the government's ambition. Prime Minister Modi's goal of turning India into a knowledge economy is tied to trusted information. Without trust, there is no knowledge.
Now, even if the Indian government passed a perfect set of AI regulations, the rules would not mean anything without global coordination. As you know, generative AI systems are not confined to national borders, and neither are published works. Luckily, we publishers have formed global alliances that have withstood pandemics, tense international relations, and terrifying new technologies. When we consider the uncertainty around AI, these alliances are now more important than ever. I cannot stress enough how organizations like the International Publishers Association are guiding our industry through these times of rapid change. Pranav has done a good job representing the Federation of Indian Publishers at IPA, but I encourage everyone to learn more about IPA's work and to get involved yourselves. Of course, Indian publishers must also make sure that you are aligned amongst yourselves, including with the Association of Publishers in India. Today, as India rises to prominence as the leader of the Global South, the international publishing community needs all Indian publishers, FIP and API, to back our mission. I hope you will consider collaborating across many organizations to support our precious industry. So far, I've only talked about the ways in which publishers can reduce the harm from AI. But that's only half the equation. Sure, we're great at playing defense, but we can also go on the offensive as well. Remember what led C.V. Raman to discover why the sea is blue? He was not afraid to be innovative, to innovate and to disrupt, even though the world had already accepted an alternative explanation. And earlier, I mentioned the technology that used to be terrifying, the internet. What did publishers do when faced with the internet? We innovated and came out even stronger than before. Just as we've done in the past, I'm confident that publishers will embrace these new technologies where they make sense. Now, I can't tell you exactly how to do this, as successful uses of AI will look different for various publishing genres and business models. But I bet some of you here already have ideas up your sleeves. AI generation is another area where I believe Indian publishers can be global leaders because India has been so good at innovation. For example, I just learned about an AI chatbot called Jugalbandi that was made by Indian researchers, language experts, and software engineers. This tool apparently tailors ChatGPT to Indian users by including Indian language translations, WhatsApp integration, and even text-to-speech capabilities. This is just one example of countless innovations I've seen coming from India, and it gives me great confidence in how you all will leverage new technologies for good. To be clear now, we cannot reap the benefit of AI without first creating regulations that protect our trusted content, and then using our combined global influence to emphasize the importance of these regulations. Once that box is checked, I cannot wait to see how our industry will continue to innovate and grow even stronger. So, as you have realized by now, I believe India's publishers have a key role to play in the industry's response to generative AI and other emerging technologies. You are backed by a government who values trusted information. You are well positioned for global leadership, and you have a history of great innovation. If you accept this role, then leadership in responsible AI by the publishing community will support Prime Minister Modi's goal of making India a global knowledge economy, and in turn, advancing India's position on the global stage. The publishing world is looking for a nation to lead charge towards the future, and India need only step into those shoes. Thank you, and once again, happy 50th anniversary.
Ladies and gentlemen, that was Mr. Youngsuk Y.S. Chi, who's currently the chairman at Elsevier. What a beautiful video message. We also have one more dignitary here in our midst who's a part of the discussions of this session, and we are very privileged to welcome here in our midst today, Shri Ajay Pratap Singh, Director General Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata, and National Library, Kolkata. A very warm welcome to the esteemed dignitary. May I request Shri Prashant Jain to please join us on stage to kindly present a shawl to the esteemed dignitary. And I'll also request Shri Ramesh Mittal to kindly join us on stage to present an idol of Goddess Saraswati as a welcome on behalf of the Federation of Indian Publishers. So, ladies and gentlemen, let's welcome Shri Ajay Pratap Singh, Director General, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata, and National Library, Kolkata. Let's put our hands together and let's welcome him as I request him to kindly address the august gathering. Respected Shri Ashok Ghosh ji, Ramesh Mittal ji, Pranav Gupta ji, Prashant ji, and all publishers present over here. I am fortunate to have this platform for sharing my ideas. Being Director General of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, it is my duty to ensure public library movement in the country and to promote reading culture among citizens of the nation. I started my journey in RRLF in 2020. Before that, I was professor of library science in Banaras Hindu University. Being professor, it was a normal incidence every year that I used to teach public library system, reading, writing culture to my students. And it was continuing since 1998 when I started my teaching. And it was a continuous feeling which was repeating every year that why my country is not having a strong public library system, quality books in libraries. I am sorry to say all these things in front of you, as you are representing the publishing industry, and the problem was relating with the society. And we were all of us were involved, or can say that responsible for not having quality system in the country. 2020 पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, कोई घर से निकलता नहीं था। इस तरह का कभी चैलेंज मुझे परेशान नहीं किया है कभी भी, और मैंने कोई काम कभी रोका नहीं है। 3 साल का आपका अनुभव मेरे लिए हो गया होगा। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ। आई एम वेरी सॉरी यदि मैंने आपके कॉल्स को रिसीव नहीं किया हो, आपसे बात नहीं की हो, आपको नज़रअंदाज किया हो। उसके पीछे लेकिन कुछ कारण था, पास्ट ट्रेंड और मेरे अपने कुछ डर। मेरे ख्याल से मार्च में मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किया और ये डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन
क्योंकि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया था, तो मना नहीं किया, डिस्कशन चलता रहा। और लगभग 2.5-3 महीने के डिस्कशन के बाद और ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेल्फ एक्सरसाइजेस के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। डर क्या था? आपकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, सच बोल रहा हूँ। मैंने नहीं ज्वाइन किया तो इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि RRLF was known for purchasing books only. The quality you can understand, and that was my fear. मैं अच्छा खासा प्रोफेसर था, मेरा अच्छा खासा प्रोफाइल था, डिपार्टमेंट में हेड रह चुका था, यूनिवर्सिटी में एडवाइज़र टू वाइस चांसलर रहा था 4 साल। इनफैक्ट इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्सिटी खुद ही चलाई थी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। चाहता नहीं था मैं कि जिन चीज़ों को मैं क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ उन चीज़ों में खुद लिप्त हो जाऊँ या ना लिप्त होने के बावजूद मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल उस समय तत्कालीन कल्चर मिनिस्टर थे। मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी शंकाएं उनको जाहिर की। काफ़ी डिस्कशन हुआ, कुछ बातें उन्होंने बताई, कुछ हमने अपने कष्ट बताए और फाइनली हम लोगों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई जिससे मैं संतुष्ट था और मैं एक नए विचार के साथ में उनके कमरे से बाहर निकला कि लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है और कोशिश करनी है कि ऐसे रास्ते निकालें जिससे अच्छी किताबें खरीदी जा सकें, क्योंकि किताब खरीदना बंद नहीं करना है, ये उनका स्पष्ट संदेश था। भागा नहीं जा सकता, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बस उनके यहाँ से आया, वापस वाराणसी पहुँच के अगले दिन पहली फ़्लाइट से कलकत्ता पहुँचा। हमारे चेयरमैन साहब उस समय सहमत नहीं थे ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा जो मैं डिसाइड करता हूँ वो करता हूँ। मैं गया और स्वयं मैंने ज्वाइन किया। पेंडेमिक चल रहा था, आपको पता है RRLF के कार्य सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में होते हैं। नेशनल बुक पॉलिसी तो बाद में आई, लेकिन कुछ जो चीज़ें हमारे और सर के बीच में डिस्कस हुई थी उसमें मैंने ये डिसाइड किया कि हम किताबों को खुद न खरीद के, खुद खरीदेंगे, कम खरीदें, लेकिन स्टेट्स को और ज़्यादा एम्पावर करें। प्रोफेसर था तो मुझे इस चीज़ का एहसास था कि यूज़र्स की, रीडर्स की आवश्यकताओं को समझना ज़रूरी है किताब खरीदने से पहले। और मुझे लगता था कि नागालैंड के यूज़र की आवश्यकता मैं कैसे समझ सकता हूँ कलकत्ता में बैठ के या तमिलनाडु की। और उस वक्त हमने थोड़ा इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया कि स्टेट लेवल पर बुक परचेजेस ज़्यादा हों, उसमें कोई कमी ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए सेंट्रल लेवल के साथ में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें रीजनल लैंग्वेज को, मदर टंग को, मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए बोला गया, कहा गया। वास्तव में मातृभाषा के माध्यम से हम अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बना सकते हैं और उस अर्जित किए गए ज्ञान को समाज के साथ में बांटने और उससे ज़्यादा समाजोपयोगी बनाने के लिए हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। आज एजुकेशन पॉलिसी यही कह रही है और संभवतः इसी दिशा में हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं। मुझे ये कह के बड़ा अच्छा लगेगा कि लगभग 3.25 साल मेरे गुजर चुके हैं, टेन्योर मेरा कंप्लीट हो चुका है। कल मुझे कुछ और असाइनमेंट भारत सरकार ने देने की घोषणा की है और इस टेन्योर में मेरे ऊपर कोई बुक परचेज से रिलेटेड कोई आरोप नहीं लगा, कोई इश्यू नहीं किसी ने रेज किया। आई एम हैप्पी टू से, जो कि मेरा सबसे बड़ी चिंता का विषय था। जब कोविड चल रहा था, अब मामला आपसे संबंधित है। जब कोविड चल रहा था तो
आपकी किताबें कहाँ जाएंगी? पुस्तकालयों में जाएंगी। नॉर्मली तो आपकी बुक्स तो लाइब्रेरी ही प्रोक्योर करती है। इंडिविजुअल्स को आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा लाइब्रेरीज को फोकस करते हैं। तो आपके हित में हमने एक बहुत अच्छा काम किया। भारत सरकार को मैं और आप सभी उसके लिए धन्यवाद देंगे। आपको पता ही है कि बाई चांस एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से एक क्वेरी आई कि क्यों ना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में रीडिंग रूम खोले जाएं। मुझे मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में सेक्रेटरी सर से बात करने का। मेरे ख्याल से शायद जून में मैंने ज्वाइन किया था और जुलाई की बात रही होगी, जुलाई 2020। तो बड़ी एक अच्छा सा मेरे साथ में एक कोइंसिडेंस हरदम रहा है कि प्रोफेसर होने के नाते मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को कन्विंस कर लूं, ब्यूरोक्रेसी को खास तौर से, और मैं कन्विंस कर लेता हूं। अभी 3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा एक प्रयास किया है, उसको आपको भी शेयर करूंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये रीडिंग रूम आप क्यों करना चाहते हैं? कहने नहीं, बच्चे आके बैठ के पढ़ें, अपनी अपनी किताबें लाएं, बस्ता लेके आएँ और पढ़ें। गांव में होना चाहिए, स्कूल बंद हो जाता है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके गांव में घर में स्थान नहीं है, फर्नीचर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक कमरा बनाया जाए, उसमें फर्नीचर डाला जाए। हमने कहा सर एक कदम और आगे बढ़िए, लाइब्रेरी खोलिए। हमने कुछ उनको उदाहरण दिए कि देखिए साहब, मेरे साथ में एक सौभाग्य ये भी रहा है कि पिछले मेरे कैरियर में RRLF में तो आके मैं कभी कहीं गया नहीं, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, नष्ट करना ठीक नहीं लगा, तो सारे इन्विटेशंस को डिनाई ही करता रहा। अदरवाइज़ बहुत घूमा हुआ हूँ संसार भर में, और सिस्टम्स मैंने देखे हैं, ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो उनको मैंने बोला कि देखिए साहब, अमेरिका में देखिए, कहीं देखिए, जब भी हम बात करते हैं सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने की, तो हिंदुस्तान में हम कहते हैं सड़क, पानी और बिजली, और वहाँ पर वो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं, हमारा महत्व बहुत ज़्यादा है संसार में, हमें हमारी पूछ बहुत है, इस मामले में थोड़े पिछड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा 10% और एफर्ट कर देंगे तो रीडिंग रूम लाइब्रेरी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हमारे साथ में एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने कहा कि सिंह साहब, आप ये सुशील कुमार जी के साथ में आप बैठेंगे और एक अच्छा सा प्रपोज़ल बनाइए और हम इसको देखते हैं। कुछ प्रयास किए, उसके बाद में आउटकम निकला, एक प्रपोज़ल हमने जमा किया। वो प्रपोज़ल 990 करोड़ का था और 27,000 गाँव में पुस्तकालय बनाए जाने थे। मेरे लिए एक और सौभाग्य की बात रही है कि मुझे भिन्न भिन्न कारणों से संघ और बीजेपी का सहयोग मिलता रहा है। यदि मिला है तो फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया। समाज के हित के लिए आया था बनारस से निकल के। मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे वाइस चांसलर ने कहा था मुझसे कि अजय तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो पे लेवल 14 की पोस्ट है, क्यों जा रहे हो वहाँ? मैंने कहा सर, ज़िंदगी भर जो पढ़ाता आया हूँ और जिसको पढ़ाते पढ़ाते कोसता रहा हूँ लोगों को, आज मुझे भगवान ने ये मौका दिया, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। तो पहले दिन से ही उसी प्रयास में लगा रहा। लेकिन उस समय थावर चंद गहलोत जी माननीय मंत्री जी हुआ करते थे, और सब जगह से जब सहयोग मिलता था तो मिनिस्ट्री में ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, वो तो मसल स्टॉर्मिंग होती है, एक्सरसाइजेस, कि पैसा निकालो भाई, इसमें पैसा देना है। ये एक विषय मेरे लिए अच्छा था क्योंकि वो सारे अंबेडकर ग्राम थे। चुनाव के नज़रिए से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सरकार के इंटरेस्ट का विषय था, और मैंने उसको पकड़ लिया था कि नहीं भाई, आपके भी इंटरेस्ट का मामला है, हमारा भी धीरे से थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो बहुत कोशिश हुई, बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि पैसा उस समय सारा कोविड में ख़त्म हो चुका था। ये बात मैं बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर 2020, पैसा था नहीं सरकार के पास। लेकिन
जब मैं समझ गया कि ये नहीं हो पाएगा तो छोड़ दिया उसको और फिर अपने दूसरे कामों में लग गया। एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल हमने बनाया है जिससे कि हम अपनी स्कीम्स को बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकें। जिन स्कीम को, जिस बेनिफिशियरी लाइब्रेरी को एप्लीकेशन और फंडिंग में 9 महीने का समय लगता था, वो अभी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाए, इस तरह का उस काम में लग गए। और फिर उसके बाद में पैरेलली हमने विचार किया कि भाई हर गांव के लिए क्यों ना आगे बढ़ा जाए। एक समय आया जब पता चला कि इस बार रिकॉर्ड जीएसटी और राजस्व इकट्ठा हुआ है, तो मन में आया पैसा जब इतना इकट्ठा हुआ है तो हमको भी शायद कुछ मिल जाए। तो हमने फिर एक प्रपोजल दिया हर गांव के लिए, लगभग 2.5 लाख गांव के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए। और फिर कोशिशें बिल्कुल वैसी एक्सरसाइजेस की, लेकिन कहीं से कोई एश्योरेंस नहीं आया। इतना ही जरूर बताया गया कि जहां पहुंचना था वहां पहुंचा दिया गया है, सिंह साहब आप शांत हो जाओ, परेशान मत हो। बहुत दुखी थे 2023 जनवरी में कि भाई टेन्योर खत्म होने वाला है, क्या हो रहा है। और ये घोषणा हुई, शॉर्ट में बताता हूँ, बजट में घोषणा हुई कि राज्यों को हम सहयोग देंगे ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोल, मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। अगेन पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स होते हैं और लागू कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेसी और नीचे के स्तर के, सबसे नीचे के स्तर के बाबू लोग। फिर लगा कि ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट तक ही रह जाएगा, क्यों ना इसके बहाने लाइब्रेरीज भी आ जाएं। फिर एक्सरसाइज शुरू करिए, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, क्योंकि मैडम ने घोषणा की थी, और हमारे संस्कृति मंत्रालय, सब जगह चक्कर लगाना शुरू किया। पता चला कि कैलकुलेशंस चल रहे हैं और उसके बाद में फाइनली रिजल्ट जो आया आपने देखा, 5,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ। और उस एलोकेशन के साथ में वो सारे क्लॉजेस निकल के आए जो हमने उनको समय समय पर दिए थे। एक उसमें कंप्यूटर हमने एक दिया था, 2 कंप्यूटर आ गए। आपके लिए विषय ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भविष्य में अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर हमारे देश को 2.5 लाख नई लाइब्रेरी मिलने वाली हैं विलेज स्तर पर, ग्राम पंचायत पुस्तकालय। ये मुख्य सचिवों को पत्र गया। अब मुख्य सचिव को पत्र गया तो मुख्य सचिव तो भाई हर एक जगह आप जानते हैं कि कंसर्न मिनिस्ट्री को वो मार्क कर देंगे, वहां पर फिर एक बाबूजी निकल के आएंगे और बाबूजी अपना एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ जाए। अब ये मैं अभी रिसेंट का उदाहरण बता रहा हूँ। दिनांक 8 तारीख मीटिंग हमारी हो रही है स्टेट लाइब्रेरी कमेटी की लखनऊ में। ऑनरेबल सेक्रेटरी फाइनेंस वॉज चेयरिंग द कमेटी और उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था इसी कॉन्टेक्स्ट में वित्त मंत्रालय भारत सरकार को जमा करने के लिए, और उसका अप्रूवल होना था। और वो आया कि स्कूलों में लाइब्रेरीज बनेंगी, प्राइमरी स्कूल में 33%, सेकेंडरी में 33% और हायर सेकेंडरी में 33%। बंटवारा हो गया, स्कूलों में लाइब्रेरी बननी है। मैंने कहा गया काम, ये मेरे दिमाग में पहले से है, ये सब ऐसे होना है, ये हो ही रहा होगा। जगह जगह पर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कन्विंस करके चीज़ों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा हुई, विद इन 15-20 मिनट्स में सेक्रेटरी साहब बहुत खुश होकर उन्होंने कहा कि नहीं, आप नया प्रपोजल बनाइए, ये सब ग्राम पंचायतों में होनी है, ग्राम पंचायत भवन में ये पुस्तकालय बनने हैं। जब ये घोषणा हुई माननीय वित्त मंत्री की, इमीडिएटली मैं वाराणसी गया, वहाँ पर कमिश्नर और डीएम के साथ में मीटिंग करके उनको फंडिंग सपोर्ट देके, और वहाँ पर कुछ 650 गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहाँ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अभी वो प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और वो बनारस हमारे देश का पहला जिला बनने वाला है जिसमें हर ग्राम पंचायत भवन में पुस्तकालय है। तो ये एक मॉडल के रूप में, क्योंकि जब हम राज्य में जाके बात करते हैं स्टेट लाइब्रेरी कमेटीज में, हर राज्य में एक स्टेट लाइब्रेरी कमेटी होती है जहाँ पर DGRLF एक मेंबर होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, अभी जैसे ये त्रिपुरा में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन, तो इस तरह से चेयरमैन होते हैं और हम लोग जाके उनके साथ डिस्कशन करते हैं, सब्जेक्ट पर बात करते हैं। किताबों की खरीदने में रुचि होती है तो हम उनको उसमें सहयोग देते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है। तो अभी इस समय ये प्रोसेस चल रहा है कि कैसे हम
पब्लिक लाइब्रेरीज को इंश्योर करें कि समाज तक वो पहुँचें। एक विषय आप लोगों से, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, लाइब्रेरी किताबों के बिना हो नहीं सकती, सोची नहीं जा सकती। किताबें अच्छी होंगी तो शायद बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, समाज को ज़्यादा फायदा मिलेगा। विषय हमारा है रोल ऑफ पब्लिशिंग इन नेशन बिल्डिंग। जब नेशन बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो उसके पहले हमको देखना है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एक अच्छे इंसान के रूप में उसको तैयार करना, एक बच्चे से उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना। जैसा उसको लिटरेचर मिलेगा उस तरह से वो आगे बढ़ेगा। लिटरेचर कैसा मिले, मेरे बहुत से खराब अनुभव हैं, हर बार के, हर साल के 3 सालों से देख रहा हूं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री ही इन्वॉल्व है और कुछ ऐसे ऐसे केसेस हम लोगों की नज़र में आते हैं अच्छी खासी संख्या में, जिनको कि यदि हम आपको रिपोर्ट करें तो आपको खुद खराब लगेगा कि अरे ये पब्लिशर्स ऐसे भी करते हैं। तो आपसे इस फोरम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नेशन बिल्डिंग के नाम पर हम एक अच्छा समाज बना सकें, अच्छे व्यक्ति बना सकें, ऐसे साहित्य को प्रमोट कीजिए। ऐसे साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश करिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं नोट करके आपके लाया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कब कहीं जाते हैं तो गीता देते हैं, और हम आप सब लोग गीता के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होंगे कि जो जानते होंगे कि गीता में 18 अध्याय हैं, 700 में श्लोक हैं, और गीता जब लिखी गई थी उसके 35 वर्ष के बाद में कलयुग की शुरुआत हुई थी। 3137 ईसा पूर्व में गीता को लिखा गया था। नहीं जानते उसके जो 700 श्लोक हैं उसके बैकग्राउंड में क्या है, लिखा हुआ है, क्या उसके संदेश हैं, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्या हमारे बच्चों को जानना नहीं चाहिए? क्या वेदों को, पुराणों को या हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं क्या जानना नहीं चाहिए? आप लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, लेकिन बहुत सा साहित्य ऐसा है। मेरे नेशनल लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबों का एक इंपीरियल कलेक्शन है। वो इंपीरियल कलेक्शन में हर किताब लगभग 150 साल, 125 साल पुरानी है। उसमें बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अपने में बहुत ही बढ़िया हैं, और आप लोगों की नॉलेज में है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं हमारे पास। क्या हम इसको रीप्रिंट नहीं कर सकते? क्या हम इससे अपने समाज को कनेक्ट नहीं कर सकते? हमारे देश को नष्ट करना था तो हमारे पुस्तकालयों को नष्ट किया गया, हमारे साहित्य को नष्ट किया गया। प्लीज जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। हमारा वो साहित्य जो नालंदा विश्वविद्यालय में था उसको जलाया गया, जिससे कि हमारी समृद्ध संपदा, समृद्ध संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने, जो अभी देवघर जी बता रहे थे, और उससे एक मोटिव था, वो मोटिव अचीव किया गया। क्या हम फिर से अपने बच्चों को उस पुरानी संस्कृति से कनेक्ट नहीं कर सकते? ऐसे लिटरेचर को नहीं पब्लिश कर सकते? चलिए, इन भावनाओं के साथ में आपके पास आया था। एक समय में ऐसा था जब मैं पब्लिशर से दूर भागता था, लेकिन जब से ये ढेर सारे पुस्तकालय को खोलने की घोषणा हुई, तब से अब मुझे लगता है कि पब्लिशर्स के साथ में हमको एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है, जिससे कि हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है कि बच्चों तक अच्छा एनवायरनमेंट पहुंच सके। आपने देखा अभी हमने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज किया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने किया, और उस फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज में हमने उन सब चीज़ों को शोकेस किया जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी इज ए कम्युनिटी ड्राइंग रूम, और वो एक संदेश था। उसके लिए हमने अपना प्रयास किया। अभी आपका रोल है कि आप प्लीज प्रयास कीजिए कि ऐसा साहित्य जो हमारी संस्कृति से हमारे बच्चों को जोड़ सके वो आगे लाइए, कम से कम दामों में आगे लाइए और उसको लाइब्रेरीज तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद। Dhanyawad Shri Singh. And ladies and gentlemen, it's time now to move on to a presentation by Quarterfold Printabilities. They are our esteemed sponsors. May I request you to please join us for this presentation?
Please welcome Quarterfold Printabilities. A very good afternoon to all. Thank you to the Federation of Indian Publishers for giving us this opportunity. I am Samir Kazi. Today, I am thrilled to present Quarterfold Printabilities, a company that embodies the true spirit of printing excellence. Started in the year 2014 by our founder and CEO, Mr. Nilesh Dhankani, Quarterfold Printabilities has emerged as one of India's leading and fastest growing company specialized in printing of educational books. We believe that as an organization, we have to be involved with our clients to the last breath of success, which is why we offer a comprehensive end-to-end solutions, right from sourcing paper, providing DTP and designing support, value engineering, printing, binding, fulfillment, and distribution, all under one roof. In last financial year, we printed 80 million copies for our 135 satisfied customers. We take immense pride in successful shipment of over 700 containers to 18 countries in Africa, USA, Mexico, and UAE. These significant projects were funded by the World Bank, UNESCO, UNAID, reflecting our commitment to making a positive impact on education globally. Quarterfold has been awarded as the most emerging SME Indian company in 2017, highest exporter of printed books to Africa for 3 consecutive years, and received the Best Print Management Company by Globe Luxury Decode Award in Dubai. Quarterfold Printabilities operate from 3 state-of-the-art factories in Navi Mumbai, spread across 125,000 square feet. All our factories are independent. We have 2 warehouses, fulfillment centers, notebook, and carton manufacturing units. Quarterfold is fully integrated provider of printing services, having 3 sheet feds and 14 web machines in various cutoff and equally large binding setup. We at Quarterfold provide unparalleled excellence, cutting-edge technology, global presence, local expertise, customized solution, quality management system,
and Sustainability Initiative. Please contact Mr. Anwar Iqbal, our regional head for North, for your requirements. Once again, our thanks to Quarterfold Printabilities. Thank you for being the esteemed sponsors for this event, and thank you for making it a big success for all of us.